Cases across India at 4,43,794 with 84,28,409 recoveries and 1,32,162 deaths. The worst impacted states, Maharashtra topping the charts at 80,728, 16,35,971 recoveries and 46,356 deaths. Kerala, the active cases are upwards of 68,000 with upwards of 4,75,000 recoveries and 1,969 deaths. Delhi, 43,000 upwards active cases, 4,50,000 upwards recoveries and 8,041 deaths that have clocked it. And amidst the talks of shutting down big Delhi markets due to spread of coronavirus, Chief Minister Arvind Kejriwal is holding a meeting with the presidents of the Market Association. All of this to discuss whether to shut markets or not and chart out the next course of action. This is coming in as the capital reported over 7,500 new cases and 98 deaths in the last 24 hours on Thursday. Meanwhile, Delhi government has asked 90 private hospitals to reserve 60% of the bed capacity for COVID-19 patients. 42 private hospitals have been asked to reserve 80% ICU beds for coronavirus patients. This after the MHA stepped in to help Delhi cope up with the deteriorating situation. Centre is adding 500 beds with oxygen facility to Chhatarpur COVID Care Centre. In addition to that, Centre would also ramp up the current availability of 3,652 ICU beds in the national capital. In a bid to check the surge, Delhi cops are cracking down on people for not wearing masks. They are still imposing 500 rupees fine as official notification of Chief Minister Kejriwal's order to hike the fine up to 2,000 rupees is still awaited. दिल्ली सरकार ने जो 500 रुपये का चालान था मास्क के ऊपर उसको 2000 का कर दिया है और जब भी पब्लिक स्पेस में आप जाएं, पब्लिक के बीच में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, अदरवाइज आपका चालान हो सकता है 2000 रुपये का। सर, एक चीज क्लियर कर दीजिए कि गाड़ी में जब आप जा रहे हैं, कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या मास्क लगाना जरूरी है या नहीं है? क्योंकि उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। लोग ये कह रहे हैं कि हम अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, मास्क लगाने की कहाँ जरूरत है? आप लगा ही लो ना, क्यों झाड़े पड़ रहा हो? कोई बुराई नहीं है, झाड़े में पड़ना जरूरी है। पहले 500 रुपये का चालान था, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था यहाँ। हाँ जी, अब 2000 चालान हो गया तो अब सोचना पड़ जाएगा कि अब मास्क लगाना जरूरी है। अब तो जो घर के अंदर से ही मास्क लगा के निकल रहे हैं। लोग पहले घर के बाहर लगाते थे, अब घर के अंदर से लगा के निकल रहे हैं। डर गए लोग? डर गए, बिल्कुल डर गए। हाँ, फर्क बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि जो लोग पहले क्या मास्क नहीं पहन रहे थे ना, तो अब जो 2000 रुपए के जुर्माने की वजह से लोग मास्क पहनेंगे, जो नहीं पहने थे वो भी पहनेंगे और पहले से काफी फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा मेरे हिसाब से। Aishwarya is now joining us live for the latest. Aishwarya, the rising number of COVID crisis, cops cracking down on violators. But just look at the visuals that are coming in. Markets are super crowded. There is no social distancing that is being maintained in these markets in Delhi. At the moment, we were supposed to get an update from the Chief Minister because he was having a meeting with the Markets Association on whether or not there should be a partial shutdown of the markets or not. What is the decision on this front? Well, Chaiti, let me tell you, no decision has been taken, but it was, from what we understand, a very intense discussion did take place between Chief Minister Arvind Kejriwal and all the presidents of the Traders Association. Now, one of the things which Chief Minister Arvind Kejriwal categorically told all these presidents is that they need to make sure everyone who's entering these markets, be it Khan Market, be it Cannot Place, be it a market like where I'm standing, Sarojini Nagar Market, everyone needs to make sure that the customers are wearing masks. However, what the presidents told the Chief Minister was that they thought 2,000 rupee fine was a bit too much. But we can see that the 2,000 rupee fine, in fact, Chaiti, has had a psychological impact. Crowded, the markets, as you rightly said, are definitely crowded, but we are seeing an impact. People are stepping out wearing masks. People do not want to pay a challan of 2,000 rupees. But yes, the next question in front of the Chief Minister definitely is to make sure how to tackle the social distancing problem, because people now are definitely wearing masks, but the markets are too crowded. We expect some decision on whether they will shut down the markets or not will come out by the evening. But in the discussion, this decision was not taken. Chief Minister, however, assured the Traders Association that they do not want to shut down markets as they understand the economic consequences of it. But yes, one thing is very clear: if you are coming out, make sure you do wear a mask, because now the fine is 2,000 rupees. Back to you, Chit. All right, leave it at that, Aishwarya. Thanks for getting us up to speed with the very latest developments on the story. Now, after Uttar Pradesh, Haryana government is going to randomly test commuters from Delhi. People coming from capital to Gurgaon are going to be randomly tested for COVID. The process is all set to begin shortly. Meanwhile, you've got random testing at Faridabad border that will begin sometime in the afternoon.
Just like Noida, random sampling at Delhi's Haryana borders is going to be done by rapid antigen-based tests. Only some randomly selected commuters will be tested. All, including delivery boys to rickshaw drivers, are going to be falling under this ambit. The order is coming in the wake of rising COVID cases in Delhi. On Thursday, 2,212 fresh cases and 20 new deaths have been reported in Haryana. And politics over coronavirus crisis in Delhi refuses to die down. Amidst rising cases, BJP and Congress accused the Aam Aadmi Party of negligence and inaction. BJP state president said that if government had taken timely steps, situation would have not gone out of hand. Congress targeted Delhi government for increasing fines for wearing a mask to 2,000 rupees, sought immediate withdrawal of this order. The Aam Aadmi Party is facing heat over its handling of COVID crisis. In turn, has blamed the centre for not delivering on the promise of providing 250 ICU beds in Delhi hospitals. The AAP spokesperson, Saurabh Bharadwaj, also blamed UP and Haryana for the failing to manage COVID crisis. This is coming after he claimed that more than half of the COVID patients admitted in Delhi hospitals are from UP and from Haryana. दिल्ली के अंदर हमने 90 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिसमें 50% ऑफ बेड रिजर्व किए गए थे कोविड के लिए, उनको बढ़ाकर 60% रिजर्व कर दिए हैं। तो 2644 एक्स्ट्रा कोविड बेड्स ऐड होंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। साथ में ही 42 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू का 80% बेड्स को रिजर्व किया गया है। पहले बड़े अस्पतालों में 33 में पहले कर दिया गया था, 42 दूसरे और अस्पतालों में किया गया है। इससे 260 आईसीयू बेड एक्स्ट्रा अवेलेबल होंगे। केजरीवाल साहब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टीवी पे एडवर्टीजमेंट देते हैं। काश ये सारा पैसा उन्होंने कोरोना से लड़ने में खर्च किया होता, लेकिन दिल्ली में तो वो खुद ही नियम तोड़ देते। जब अक्षरधाम मंदिर में उन्होंने दीपावली पूजा रखी तो उसमें सारे नियम ताक पे रख दिए। तो जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसा करेंगे, पूरा मंत्रिमंडल करेगा, तो फिर दिल्ली को कौन बचाएगा? विपक्ष के नाते हमें ये तो कहने का अधिकार है कि आपने ये कमी की जो आप समय रहते करते। आज कोर्ट भी उनको फटकार लगा रही है, तब भी नहीं उनको काम करने की नहीं सूझ रही है। कोर्ट ने उनको 2-2, 3-3 बार फटकार लगाई है। पहली बार लगाई थी, उसके बाद केंद्र सरकार ने इंटरवीन किया, फिर दूसरी बार फटकार लगाई, केंद्र सरकार ने फिर इंटरवीन किया, और अभी तीसरी बार फटकार लगाई कि आपके पास सारे आंकड़े थे कि कोरोना केसेस बढ़ेंगे नवंबर में, ये मेजर्स लेने चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बगैर मास्क के चालान की जो कीमतें 500 से 2000 कर देना जुर्माना, और लोगों से अपील करना कि लोग और पॉलिटिकल पार्टीज मास्क बांटें, कहीं ना कहीं ये पूरी तौर पर दिखाई देता है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से फेल साबित हुए। यानी कि सरकार हर मोर्चे पर कोविड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें फेल साबित हुई है। ये तानाशाही जो डिसीजन है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। इस भ्रष्टाचार से 2000 रुपए के फाइन के बाद कौन गारंटी लेगा कि फाइन करने वाला आदमी मोल भाव नहीं करेगा।